Hello everyone. Today we will solve some numerical on the basic of impulse and momentum. So this is your first question, but before I solve this first question, first I want to just remind you that what is the basic formula of impulse and momentum, which we have discussed in previous class. So we have already discussed that impulse is denoted by J. It is a vector quantity and its value is equal to force into time. That means for a small time, we know that for a small time the force will be so large, and for a small time the force will be so large, and that is called as impulse. And the large force exerted in the body for a small time रे जदि अधिका फोर्स गोटे बॉडी ऊपर एक्सर्टेड हेबा दैट इज कॉल्ड एज इंपल्स। हम बुझे भी थी स्मॉल टाइम रे तुम फोर्स लार्ज रही बोलिके बुझे थी। जदि नहीं बुझवा बेले देख आउ थे से एग्जांपल दिले बुझे दउछ देखो इटा जदि इंपल्स तुम 20 न्यूटन सेकंड थिबो धर फोर्स टाइम के हम 1 सेकंड करना। सो 1 सेकंड करना बेले फोर्स विल बी मस्ट बी 20 न्यूटन, then impulse is 20 Newton per second, 20 Newton second. So if we increase the time up to 2 seconds, but the impulse, the value of impulse will be keep at constant. So force will be 10 Newton. Any force will be 10 Newton, then 10 into 2, impulse will be 20 Newton per second. First, if we increase the time again, then the value of impulse remains constant or keep constant, then force will be 5 Newton. So I mean, just look it that if we increase the time period, the force decreases. तो अधिका जदि आम टाइम बढ़े दमा फोर्स कमी जीवा ता माने टाइम पीरियड बहुत स्मॉल टाइम रे ही अधिका फोर्स एक्सर्टेड हेबो गोटे बॉडी ऊपर। ये तो तुम प्रैक्टिकली भी तुम जानिछ जे बहुत कम टाइम रे ही जे कोनोसी बॉडी ऊपर अधिका फोर्स एक्सर्टेड हेबो। तो तुम फुटबॉल को किक करबा अछि जे तुम कम टाइम रे किक करि पारलो बोले से अधिका फोर्स एक्सर्टेड हेबो, और तुम धीरे से किक करबो से कम अधिका टाइम टेकन करबो से कम फोर्स एक्सर्टेड हेबो। तो ऑलरेडी तुम डिस्कस करथिले प्रीवियस क्लास रे। सो मु जस्ट रिमाइंडेड यू दैट small time रे दिन force ता अधिका exerted होचे, that is called as impulse. And the formula of the impulse can also be equal to change in momentum. Why the formula of impulse can also be equal to change in momentum? According to Newton's second law, we know that the force is equal to rate of change of momentum. The force is directly proportional to rate of change of momentum. So if F into dt is equal to dp, and we know that force into time, for a small time, if a large force experienced on a body, then it is said to be impulse. So force into time is impulse. So instead of force into time, we can be write impulse. So impulse is also equal to change in momentum. Impulse is also equal to change in momentum. So must be remind this formula that impulse is force into time and it is also equal to change in momentum. And this formula is sufficient to solve any question related with the impulse and momentum. So let's focus this question. First, you must be remind or know this formula how the impulse can be derived. That is, impulse is equal to force into time and it is also equal to change in momentum. So as per your question, the given data is the initial speed of a body mass 2.0 kg is 5.0 meter per second. That means let's the initial speed is u, and as per your question, initial speed is 5 meter per second of a mass of body. In body move करूचे, the body having mass 2.0 kg. The body having mass 2.0 kg, and a force acts for a 4 seconds. That means
in this case the total time will be 4 seconds. That means ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡିଟା ମୁଭ୍ କରୁଛି 5.0 मीटर पर सेकेंड से टाइम रे तमर फोर्स केते एक्सपीरियंस करूची 4 सेकेंड सॉरी फोर्स एक्सपीरियंस जोटा होची से केते टाइम रे होची 4 सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी जे डायरेक्शन में मूव करूची से डायरेक्शन रे तमर फोर्स एक्सर्टेड होची केते टाइम जाए 4 सेकेंड टाइम जाए. तो कहजे कैलकुलेट द इंपल्स ऑफ द फोर्स एंड फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी. Impulse of the force and final speed of the body. That means we have just calculate. We will calculate what is the magnitude of impulse and what is the final velocity of the body. So how can we calculate? Just look it. So in previous class I have already told that the force time graph. This is force time graph. Along y-axis, force is taken with the Newton. And along x-axis time is taken in second. And you just know that the area under the force time graph give the magnitude of impulse. In previous class I have told that how can the force area under the force time graph produce impulse. Just look it that suppose this is force and this is time, and suppose this is the initial time t1 and in final time t2. If force is constant, with passage of time the force is constant. Suppose in t1 time this is the value of force and t2 time this is the value of force, and force will be constant. So this area between t1 to t2, this area can be represent the impulse, because you know that area, suppose ABCD, area is equal to in this diagram area is equal to AD into CD. And what is AD? AD is parallel to the F. Suppose in this case AD is parallel to the F, so AD is equal to F, because F force is represented in this situation. So F into CD is equal to T2 minus T1. That is F into changing time. So you know that force into time is represent impulse. So you must be remember that the area under the FT graph, force time graph, the area under the force time graph represent always impulse. So in this case देखो मुझे सब जिनिसटा तुमके ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे कही थी. सो तुमने प्रीवियस क्लास के जदी डाउट अच्छे बोले प्रीवियस क्लास के देखि जाबो जे फोर्स और टाइम ग्राफ. देखो फोर्स y एक्सिस रो छै, टाइम x एक्सिस रो. तो फोर्स के भाग दियो लेंथ, y के भाग दियो ब्रेथ. तो लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया. सो फोर्स लेंथ f, ब्रेथ टाइम t. तो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू impulse. So length into breadth is equal to area. That means instead of length force, instead of breadth time. So length into breadth represent area. So force into time also represent area. So that force into time is impulse. So area under the force time graph represent impulse. So we can calculate how can the area cover in 4 seconds, because total time is 4 seconds, and in 4 seconds calculate the impulse or force and final speed. So in 4 seconds area covered by the body is O A B C E. O A B C E. O A B C E. So in 4 seconds area of AB, A, O, A, B, C, E equal to area of O, A, x, area of O, A, x plus area of A, B, x, A, B, x, area of
AX B dex B plus area of BC C dex B dex BC C dex B dex plus finally area of C ABCD CDE is EC dex area of CDEC dex. So in this case I want to calculate the impulse, and this force time graph, the area under the force time graph represent the impulse. So in 4 seconds the total area covered by the body is O, A, B, C, D, E. Now how can this total area can be calculated? If we calculate this area, this area, this area and this area, and all of the area under O, A, B, C, D, E, if added, then we finally calculate O area of the O, A, B, C, D, E. So let's see how can the O, A, B, C, E area ta O, A, B, C, D, E area ta तम ट्रायंगल रेक्टेंगल पैरेललोग्राम रेक्टेंगल सब एरिया एड सहित जदि एड करना बोले टोटल फाइनल एरिया इ टोटल रो पाइजिमा, एंड दैट फाइनल टोटल एरिया रिप्रेजेंट्स द impulse, because I always told that force area under the force time graph represent impulse. So let's calculate the area of OA AX. Area of OO AX. So you know that this is a triangle. So the formula of area of triangle is half into base. देखो ट्रायंगल आमे की OAX रो एरिया बाहर करछो, तो हम नीचे देखो OAX रो एरिया के हिसाब से बाहर करबो, नीचे देखबो आ बनेबो OAX triangle half into perpendicular into base. So perpendicular is 3 into base. Base will be 1.5. So base will be 1.5. Initial time, final time minus initial time 0. 1.5 minus 0 is 1.5. So देखो हमें इन और जन बेस का बाहर करबो 0 to 1.5 तक रिप्रेजेंट करछि, तो फाइनल टाइम 1.5, इनिशियल टाइम 0 सेकंड, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करबो 1.5 माइनस 0. सो प्लस एबे एरिया ऑफ द डेक्स देखो हमें टोटल एरिया बाहर करू जेतो हमें 4 सेकंड ले इंपल्स बाहर करबा अछि, तो इन 4 सेकंड द बॉडी कवर दिस टोटल एरिया OA B C D E, and that total area is represent the impulse. So the total area is equal to sum of this individual area. So finally this area can be calculated, A, B, C, D area can be calculated, length into breadth. So length will be 3 into breadth. Breadth will be 2.5. The area can be calculated between A to B, because this area of this rectangle represents AB, B dash A dash. So initial time 1.5, final time 2.5. So final time को initial time के minus करो, 2.5 minus 1.5, that is equal to 1. 2.5 minus 1.5, that is equal to 1. Plus area of this parallelogram. So what is the formula of area of this parallelogram? Half into दुईटा parallel side रो summation plus a into perpendicular distance. तो दुईटा parallel side देखो पूरे वाला B dash which is equal to 3 plus आ गोटे parallel side देखो parallelogram रो एरिया बाहर करबो, सबकर एरिया तुम इंडिविजुअली बाहर करबो बहुत सारा एरिया. सो आ गोटे parallel side देखो CC dash जार वैल्यू केते 2.
परपेंडिकुलर इटा 3 देखो तमे ई दुईटा भितर तुम एरिया बाहर करबो अछि BC CDX BDX तो ई दुईटा पॉइंट भितर टाइम केते अछि देखो 2.5 अछि और 3 अछि तो 3 - 2.5 करबो फाइनल टाइम रो इनिशियल टाइम तो 3 - 2.5 करले 0.5 plus final the area of the CDE CDX is equal to CCDX is equal to 2 into length into breadth is equal to देखो CDE CDX ई भीतर तमाम ई breadth कितना है final time minus initial time 4 - 3 that is 1. So this is the area. So I can directly write the area. The area is equal to 8.50. 8.50. And this area represents impulse. So impulse is equal to 8.50 Newton second. सरला तो हमके impulse रा वैल्यू बाहरी वाला एबे हमके दरकार फाइनल वेलोसिटी. So final velocity can be calculated by the relation of force and change in momentum. Impulse and change in momentum because impulse हमें पाई वाला mass दी दी छे, velocity initial velocity दी दी छे. So एबे just कहलु मैं जे impulse और change in velocity बाहर कर दमा बेले final velocity आराम से बाहरी जीवा. So you know that impulse is equal to change in momentum and change in momentum can be write the final momentum minus initial momentum. That is change in momentum can be write as mv minus u. That implies impulse will be 8.50 is equal to mass will be 2 whole into final velocity हमके दरकार final velocity and initial velocity is 5. So you can easily find the change in momentum, a change in value. आराम से भाई जीवो तो बहुत सारा दिया किसी नहीं ना देखो impulse हमें पाई गलो mass already तुमके दी दीजिए तो मैं जान दिस इज द मेन फार्मूला ऑफ impulse रो दुईटा फार्मूला यूज है गोटे फोर्स इनटू टाइम और चेंज इन मोमेंटम आउ जदि फोर्स टाइम ग्राफ थिबा बेले impulse रो फार्मूला हेबा एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ. तो तीनटा फार्मूला मन रखिथिबो. मेन फार्मूला होचे फोर्स इनटू टाइम आउ गोटे होचे तमर चेंज इन मोमेंटम आउ गोटे तमर जदि फोर्स टाइम ग्राफ थिबा बेले impulse रो फार्मूला हेबा एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ. सो जहां भी बाहरीबा फाइनल वेलोसिटी तमे बाहर करबा हला. ओ नेक्स्ट हमें देखना ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा करमा टाइम कितना 2 balls each of mass 0.05 kg moving in opposite direction moving in opposite direction with speed 6 meters per second. Collide and rebound with same speed So what is the impulse imparted to each ball due to other? What is the
impulse imparted to each ball due to the other. सो देखो ये बहुत 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 सजिया क्वेश्चन किछि नै ना हम गिवन के लेके जाबो बोले दिबा क्वेश्चन रो आंसर ता गिवन देखो two balls each of mass 0.05 kg that means mass of the ball is 0.05 kg moving in an opposite direction with same speed moving in opposite direction suppose ये दुईटा बॉल अछि दुई लोकर मास आइडेंटिकल मास में समान मास दिछे और से माने मूविंग होचन ई डायरेक्शन में मूव करले आउट ई डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करछन दे आर मूविंग विथ ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन with a speed of 6 meter per second ता माने तमर स्पीड दिछि तमे देखो एटा इनिशियल स्पीड करो काहे कोलाइड हला पर आउट फाइनल स्पीड बाहिबो सो इनिशियल स्पीड तमर दिछि 6 meter per second हला तापर कहै छै they collide and rebound with the same speed तार माने when they collide with each other collide हला पर से माने परस्पर रिबाउंड हेबे जेला बॉल collide हला पर रिबाउंड हेबे तो केते स्पीड रिबाउंड हेबे से सेम स्पीड ने ही रिबाउंड हेबे तार माने से सेम स्पीड जेते स्पीड मूव करथिले सेते स्पीड रिबाउंड हेबे किंतु डिफरेंस सब माने ई माने जे स्पीड माने ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करथिले तापर से माने collide हला पर रिबाउंड हेबे ऑपोजिट डायरेक्शन में आउथरे रिबाउंड हेबे तो फाइनल स्पीड कैन बी represent with minus sign then what is the impulse imparted to each other due to other तमने दुटा बॉल भीतर तमर इंपल्स केते हो बाहर कर बोलछ किंतु बुझी पारबा अछि जे दुटा बॉल का तमर सेम स्पीड रे जाउतिला किंतु कोलाइड हला पर जेते बेले से माने रिबाउंड हेले कोलाइड हला पर से जेते बेले रिबाउंड हेले से सेम स्पीड नहीं रिबाउंड हेले तो फाइनल स्पीड में माइनस हेबो बिकॉज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में रिबाउंड हेले काजे जाउतिले 6 मीटर पर सेकंड किंतु कोलाइड हला पर बैक कॉले से सेम स्पीड रही तो फाइनल वेलोसिटी समान हेबा किंतु जेहेतु बैक करूछन से लागे जे साइन लागबा माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन बैक करूछन सो हमके पता छै इंपल्स तो आराम से बाहर जीवा बाबू माने इन मास वेलोसिटी दी छै किने जदी फोर्स ऑफ टाइम दी थी ता बोले इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम करथि तो किंतु इन मास ऑफ वेलोसिटी दी छै सो इंपल्स कैन बी obtained by the formula change in momentum and we know that impulse is equal to final momentum minus initial momentum that is m v minus u so m रो वैल्यू तमर केते दिछे क्वेश्चन रे 0.05 v रो वैल्यू केते दिछे -6 माइनस u रो वैल्यू केते दिछे -6 तो सॉल्व करबा माने जहां भी भारी बा दैट इज इंपल्स अब यूनिट मन रख दिबो जे कोनोसी फिजिकल क्वांटिटी लखला पर यूनिट लगबो बाध्यतामूलक यूनिट लगबो मन रख दिबो यूनिट इंपल्स रो तमे जानि छ इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम सो इंपल्स रो यूनिट हबा न्यूटन सेकंड अब इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम रो सिंबल p सो मोमेंटम रो यूनिट जेंटा इंपल्स रो भी सेटा ही हबा बिकॉज़ इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन momentum a momentum is equal to mass into velocity so mass of kg into velocity of meter per second so impulse ro दुईटा यूनिट पड़बा न्यूटन सेकंड और kg मीटर पर सेकंड मन रख देबो यूनिट भी पदे से परीक्षा जेतो इंपल्स मोमेंटम सहित समान तो मोमेंटम रो यूनिट समय भी इंपल्स रो यूनिट समान है नेक्स्ट next question a 0.25 kg tennis ball moves east at a speed of 50 meter per second and strikes
on wall. Wow. So the ball bounces back to back at a speed of 50 meters per second. Back at a speed. Self speed लिखेगा बार. Self speed. The contact time between the wall and ball. The contact time between the wall and ball was 0.015 second. So what average force exerted by the ball on the wall? What average force exerted by the wall on the wood? It will be बहुत सही question. So just focus the question and find the given data. So mass given mass of the ball is 0.25 kg. Tennis ball moves east at the speed of 50 meters per second. देखो इन दुईटा स्पीड है कहां से देखो स्पीड देखो गोटे बॉल टा मूव करूचे एते स्पीड रे एंड स्ट्राइक ऑन द वॉल स्ट्राइक कला और वॉल सपोज धरो एटा होजन वॉल इन गोटे बॉल के हमें मूव करना इस डायरेक्शन मूव कर इस डायरेक्शन मूव कला केते स्पीड रे मूव कला विथ द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड और से बॉल टा हमर वॉल रे स्ट्राइक कला स्ट्राइक करबा द्वारा तुम बॉल बाउंस करी आ थोड़े बैक हबा बॉल टा बैक हबा केते स्पीड रे बैक हबा लेका जे सेम स्पीड जेते स्पीड रे से जाई करी बोम्बार्डेड इतिरा सेते स्पीड रे बैक हबा दैट मींस फाइनल वेलोसिटी भी हबा 50 मीटर पर सेकंड किंतु इस डायरेक्शन रे गला बेल के तमर वॉल रे जेते बेले से बॉल टा बोम्बार्डेड हला तार स्पीड के 50 मीटर पर सेकंड लेखा तो से सेम स्पीड में ही से रिटर्न करूची किंतु अपोजिट डायरेक्शन रे रिटर्न करूची सो फाइनल स्पीड इज टेकन एज विथ नेगेटिव साइन सो सेटा मन रखिथिबो देखो जेते स्पीड रे गला सेते स्पीड रे रिटर्न करूची किंतु गुटे स्पीड जदी पॉजिटिव डायरेक्शन रे गला गुटे स्पीड तमर साइन कन्वेंशन हिसाब से नेगेटिव ही हेबो तब होचे द कांटेक्ट टाइम बिटवीन द वॉल एंड बॉल जेते बेले बॉल टा बोम्बार्डेड हला वॉल रे जेते बेले बॉल बोम्बार्डेड हला ताकर भीतर कांटेक्ट टाइम केते रहला कांटेक्ट टाइम तमर रहला 0.01015 सेकंड आ देखो तुम तो इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड बुझी गलो इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकंड रे जाई कोई बॉल टा वॉल ऊपर बोम्बार्डेड हला और सेते स्पीड से बैक हला तार फाइनल स्पीड भी 50 मीटर पर सेकंड किंतु जेतु बैक होचे अपोजिट डायरेक्शन में तो फाइनल स्पीड इज टेकन विथ नेगेटिव साइन सो व्हाट विल द एवरेज फोर्स तार माने हमके क्वेश्चन में पचरे छे फोर्स exerted by the wall on the ball देखो जेते बेले बॉल टा किसी हवा वॉल केते फोर्स बॉल ऊपर exerted करबा त माने फोर्स पचरे छे तो हाउ कैन वी फाइंड द फोर्स देखो इन फोर्स आराम से बाहर जीवा इंपल्स फार्मूला जदी तुम यूज करो बोले फोर्स आराम से बाहर जीवा बिकॉज़ तुम जणा पड़ुचे फोर्स हाउ टाइम दो इंपल्स पाई जीवो आ मास दीचे फाइनल मोमेंट फाइनल वेलोसिटी दीचे इनिशियल वेलोसिटी दीचे बोले चेंज इन मोमेंटम पाई जीवो तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम रो फार्मूला लगे देबो बोले फोर्स रो वैल्यू आराम से बाहरी जीवा बिकॉज़ वी नो दैट इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन momentum. So instead of impulse we can also be write force into time is equal to change in momentum can be write final momentum minus initial momentum. That means instead of this if mass is taken as common then this is equal to v minus u m whole into v minus u. So this formula can be v minus u.
सो तुमके क्वेश्चन रे टाइम दे दीचे देखो तुमके फाइनल वेलोसिटी दे दीचे मतलब तुमके क्लू देथिला जे जेते स्पीड जाई की वाल रे कोलाई गेला से स्पीड रिटर्न होला मतलब फाइनल वेलोसिटी दे दीचे तार माने क्लू इनिशियल वेलोसिटी दीचे टाइम दे दीचे मास दे दीचे तो आराम से फोर्स बाहरी जीव बट फार्मूला तुमके भाबा के पड़वा भाबी पारबा अछि जे ई वे रे हमें बाहर करी पारमा तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हवा मास v minus u upon t सो तमे वैल्यू पुट करबो मास रो वैल्यू पुट करबो फाइनल वेलोसिटी रो वैल्यू पुट करबो u रो टाइम रो सब वैल्यू पुट करबो निजे आंसर बाहर करबो और जहां भी आंसर बाहरिबा फोर्स रो तो जेहेतु फोर्स तो तार यूनिट तुम न्यूटन लिखबो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सरिया क्वेश्चन माने फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन माने जेन पिला जदि बुझुच बेल तो निजे डायरेक्ट करि पारबो किछ नै ना नेक्स्ट क्वेश्चन तुम how much momentum will a ball of mass ten kg transport to the floor if it falls from it falls from a height of 18 centimeter. Take it downward acceleration to be downward acceleration to be 10 meter per second. So actually this is ball and the ball of the mass 10 kg के भी नहीं है. तो first question this is your question, that is how much momentum will a ball of mass Fp transfer to the floor if it falls from a height of 18 centimeter. Take it downward acceleration to be x. That means given data solution, given data question में तुमको पता चले momentum, that is p पता चले. What is momentum? What is the magnitude of momentum? जितना लोग ball of mass दिसे तुम्हारे 10 kg transfer to the floor. तामाने floor ऊपर से पहुँचे. So if it falls from a height of कितने height रो पहुँचे? Height पहुँचे तुम्हारे 80 सेंटीमीटर हाइट रो पूरे बेल पड़ुची क्या ऊपर फ्लोर ऊपर बेल ना पड़ुची. टेक इट डाउनवर्ड, देखो टेक इट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकंड. दैट मींस एक्सेलरेशन दीजिए तुमके 10 मीटर पर सेकंड. सो योर गिवन डाटा इज हाउ मच मोमेंटम विल बी टेक. देखो मोमेंटम बदले से तुमके मास दीजिए 10 kg
हला 10 kg तापर कहिचे तमन इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर ता माने से डिस्टेंस तमन दे दीचे केते डिस्टेंस ट्रैवल करा हमके दे दीचे s दे दीचे ता माने से बॉलटा बेलटा तमन ई रो फ्लोर जाय पड़वा पे ता डिस्टेंस केते ट्रैवल करा 80 सेंटीमीटर का मीटर को लेके मल्टीप्लाई हबा तापर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दे दीचे आ तमके आउरे जिनिस दीचे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आउरे जिनिस दे दीचे फाइनल वेलोसिटी केते हबाई ना फाइनल वेलोसिटी इज 0 का जे जेते बोले पड़वा फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 हबा सो तमे जदी इनिशियल वेलोसिटी बाहर करि पारबो बोले तमे आराम से मोमेंटम पाई जीवो बिकॉज़ तमके इन चेंजिंग मोमेंटम पचलिछि सो इनिशियल वेलोसिटी पाई जीवो बोले आराम से पाई जीवो सो तमे इन फार्मूला लगे पारबो v² - c² = 2s लगे पारबो सो तम सेनु u रो वैल्यू बाहर जीवा इनिशियल वेलोसिटी पाई जीवो फिर फाइनल वेलोसिटी तो 0 अब इनिशियल वेलोसिटी पाई गला बोले मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इज मोमेंटम इन फाइनल वेलोसिटी 0 तो 0 इनटू मास इज = मोमेंटम 0 ही हबा किंतु तम चेंज इन मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम ऊपर भी डिपेंड करि पारबा सो तमे फार्मूला लगा दबा डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रो v² - u² = 2as so v² - c² = 2as तो minus u² = v² का माने u² = v² - 2as so u² = 0 into 2 minus 2 into a is 10 distance is 8 into 10 to the power minus 2 so u is equal to root over of minus तो बाहर रख ले चलवा 2 into 10 20 और 16 into 10 into 10 to the power minus 2 that is 10 to the power minus 2 minus 1 10 to the power minus 1 so your momentum will be equal to 4 root 10 to the power minus 1 then momentum is equal to mass into velocity so momentum is equal to mass is 10 mass into velocity that means change in momentum is equal to initial final momentum minus initial momentum final momentum to 0 है because final velocity 0 so momentum is equal to minus m that is minus mass is 10 into u is minus 4 root 10 to the power minus solve this and you get the answer next question next last question देखि देबो last question a constant force of 50 Newton is applied to 20 kg block 20 kg block for 10 seconds. So question is what is the impulse acting on the block? First, what is the impulse acting on block? Second question पचरे जो तमार what is the change in momentum of block? What is the change in momentum of block? Third question पचरे जो what is the final speed of the block?
what is the final speed of the block if it was originally moving at moving at 15 meters per second. So this is your question, and this question is easy for you when you update formula. So first you focus in the given data, and given data is a constant force 50 Newton. It's applied to 20 kg block of mass. Suppose this is a block of mass, a block which having mass 20 kg, and if we apply the force on the block of mass with 50 Newton, तामें क्या suppose अगर block of mass, इस block of mass ऊपर हमें force apply करो as per question 50 Newton, as a block of mass होचे 20 kg. अब कितने टाइम जाए apply करो? Mass of the block is 20 kg. अब कितने टाइम तक तुम्हें force apply करो? You apply force for second 10 seconds. So this is your given data. So question में पता है first impulse पता है. So you easily find the impulse. You can easily derive the impulse because तुमसे force दे दीजिए, time दे दीजिए, force और time दीजिए बोले impulse easily बाहर जीवा. Force into time is equal to impulse. There is force is equal to 15 Newton into time is equal to 10. That means impulse is equal to 50 Newton second. 500 Newton second. So now the first question वाला. Second question पूछ रहे final second question पूछ रहे change in momentum. Change in momentum. So तुम्हें तो जानी चाहिए जे impulse ही change in momentum से समान. So you know that impulse is equal to जहाँ change in momentum भी सेटा ही है because impulse is equal to change in momentum. So direct it will be right. Change in momentum is equal to 500. But momentum का formula है बताना mv, that is kg meter per second. Then last question. So first, the last question is what is the final speed of the block? If we apply the force, then this block is moved. So according to your question, ask that what is the final speed of the block? If it was originally moving at, तब तक initial velocity तुमके दे दीजिए कितने? 50 meter per second. 15 meter per second. That means से block का यदि originally 15 meter per second में यदि already move करो थिला, तो last के तुम्हारे देते बोले force apply करो. Force apply करवा द्वारा से final speed of the block कितने होगा? तब तुमके initial velocity दे दीजिए और final speed of the block is पूछ रहे थे तुमके. तो देखो क्या निशान बाहर करो तुम्हें तो कहीं जाओ जे mass तुमके given data रे दे दीजिए. So mass velocity that means momentum दे दीजिए और तुम्हें impulse already पाई छो. तो आराम से तुम्हें impulse और momentum के related कर बोले final velocity पाई जीवो. जब भी impulse is equal to change in momentum. तीनों तुम्हें final velocity आराम से पाई जीवो. because तुमके initial velocity दे दीजिए, mass दे दीजिए, impulse जानी छो तुम्हें. तो instead of impulse we can use 1500 is equal to change in momentum can be write as final momentum minus initial momentum. That is if we put the mass common, then m whole into v minus u. M whole into v minus u. So 500 is equal to, instead of mass in your question we can be used to 20 kg. Final velocity r and initial velocity will be 50. So you can be find the final velocity. आराम से बाहर जीवा तो कटी जीवा डायरेक्ट 0 कटी जीवा 25 that is इधर रखो कितने हवा final velocity is equal to 25 minus 15 यार के जीवो तो 25 plus 50 that is 40 meter per
तो बहुत सहजिया क्वेश्चन तुम जब बुझी पार बोले बहुत सहजिया लगवा। सो देख तुम इन इम्पल्स दी दीचे इम्पल्स पाई जाइछ इनिशियल स्पीड दी दीचे तो फाइनल स्पीड क्या है नहीं बारी मास तो तुमके दीचे। सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम फार्मूला लगे फाइनल स्पीड बाहरी। आज ये थैंक यू।